Hello, mic check. This is Dr. PK presenting a video. This is Dr. PK presenting a video on missed heat. It's a common factor in the dairy entrepreneurs, dairy business holding people, the farm people. They are missing this heat of the animal very often, and that is why we thought to have a video on this and which clarifies stepwise that how this missing heat is going to create a great loss, a big loss. So the heading of the video is missed heat, a big loss. And now this is our credential and plus our YouTube channel where you can watch our recent videos and all videos. You can select the videos and you kindly subscribe to get the information about if once the new video has come. So you'll get the information, and plus you can select the videos of your choice of your subject. So here this subject is on the heat symptom, missing heat in the cows, and how we can examine it and how we can get benefit of this video. This is all is covered into this. What we are going to examine in this estrus cycle, ovulation, economic loss, and solutions. What are the solutions? The next slide says this is a Government of India data of the animal census 2019, which is the latest available data. Later on, 2023 census is going on. The data is yet to be released. With this data, we can find out that if we are having 100 millions of buffaloes, about 51 millions are only into breedability. This is a big question. Why we are about half only buffaloes we are breeding and why not the other? And the story is not very good in the cows also. But here I am highlighting because this data is available and this I presented in the other video, and I wanted to convince the audience that this is the situation of the country. And when we talk that the per animal production is low, this is one of the major reason. Then the breedability in the animals is very low. And what are the reasons for this breedability low? It's either the genetic, we have not upgraded the genetics, we have not saved our own buffaloes germplasm for a, we have not cared actually. The scientific institutions, government institutions, and organized dairy farms have saved these germplasm, but the major people, the major population of the country is not bothering about the upgrading the germplasm of the buffalo, and similarly with the cows also. So that is a concern, and that is why per animal productivity in India is very low. We stand 15th in the world. And what is the other reason behind that is negative energy feeding. In India, most of the animals, I repeat, most of the animals suffer with the negative energy feeding. Negative energy means whatever animal body requires, animal is not getting that, and the productivity is getting affected. So that is how we are lowest into the per animal productivity, per lactation productivity of the cows and buffaloes in the world. So this is second reason. The third reason is the stress, and the stress is a major reason. As human beings are getting into day by day into more stressful conditions, animals are already suffering. Their condition is bad than what we can conceive that they are suffering with the stress. We will be looking at the many slides, and we will be showing you how the animals are suffering with the stress. The climate itself is getting hot day by day, and the handling of animal is becoming rough day by day by the animal keepers, and that is that is the big concern. Look at that, how I'm going to show you a picture. This picture is poorly fed, poorly housed, and highly stressed animal
living in our country. And this story is not only for one or two places. This story is in the 80 to 85% cases roughly in the country. The urban area animals are kept like this. And look at the health of the animal. Look at the shed of the animal. The left side is showing is the shed. The animal goes in the night into that. Sometimes it is on the road. Animals are tied entire day on the road. Sometimes they go for the grazing as well. You know how much green grass they will get in the cities. And then it is on the road. Vehicles are passing. So all kind of stress are here. Sun stress is there, heat stress is there. Animals are exposed to the frequently moving vehicles, large vehicles, small vehicles. Sound pollution is there, and animal has got no safety of the surrounds. They are exposed completely. And this is how the story of the India. In most of the cities and towns, you will find animals are being reared on the bank of the on the road, right on the road, not on the bank, right on the road. So this gives a kind of picture that what we are talking about, the productivity in the animals and how these animals are being fed. You look at their body and you will see they are height bound condition. Already bones are clear, सबकी बोन्स क्लियर हैं. इससे दिखाई देता है कि एनिमल्स को खाने को ठीक से नहीं मिलता, इनको रहने को ठीक से नहीं मिलता. अब आप ये समझिए कि इनका लिया हुआ दूध कितना ही हेल्प करने वाला है इंडियन कंडीशन में. तो हम जब एनिमल को पालते हैं, तो जैसे हम एक डॉग को पालते हैं, तो डॉग को पालते हैं कितना लव करते हैं. जब हम एक एनिमल को, एक गाय को पालते हैं, तो ये सोच के पालते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं. एक्चुअली वी आर नॉट डूइंग, वी आर डूइंग सिन. If you are keeping the animal like this, you are doing actually sin, not actually you are helping the animal. The animal is going to curse you. Think on that. Think on the animal psychology. They are also having life in their body. So what is this? It is called, what are the terms we are going to use into this? Estrus is the term which is called the heat. Heat is a sign which animal shows when it is ready to accept this semen, ready to accept the bull or ready to accept the AI. So that is sign is called, that period is called the estrus. It repeats every 21 days in the cow. I repeat, every 21 days estrus comes in the cow. It is called heat in the cow. Heat in the cow. In the local language, people say that गाय गर्म हो गई है, गाय बोल गई है, गाय हीट में आ गई है. Like that, these are the terminology being used in our country. And then they start looking for the inseminating the animal. Look at the terms. Prepubertal. Prepubertal वो हैं those who have not yet grown. They are growing heifers. ये बच्चियां हैं. They are yet to be grown to accept the semen, to become mature, to accept the semen, to come to the cycle. It is the heat cycle. They have not yet come. They are called prepubertal. Puberty is called the maturity. Now the heifer has matured and it is ready to cycle. It is ready to produce the cycle. It comes in the heat, not very regularly, but after some time, after 1 or 2 months, they become a regular cyclic animals. मतलब एवरी 21 डेज उनका हीट आना शुरू हो जाता है. वही टाइम है कि जब हम उनको मानते हैं कि मेच्योर हो गए हैं और इनको हम इंसेमिनेट कर सकते हैं. अब आगे आप देखिए ईस्ट्रस साइकिल क्या होता है. ईस्ट्रस साइकिल हमारा 21 दिन का होता है. ये हर 21वें दिन एनिमल हीट में आता है. जस्टेशन पीरियड क्या होता है? जस्टेशन वो होता है कि एनिमल कितने दिन अपने पेट में बच्चा रखता है. प्रेगनेंसी पीरियड क्या है? दैट इज कॉल्ड द जस्टेशन पीरियड. पार्चुरेशन हम लोग यूज करते हैं. पार्चुरेशन मतलब बर्थ, काविंग कब हो रहा है उसको हम पार्चुरेशन कहते हैं. ह्यूमन में डिलीवरी कहते हैं, यहाँ पे हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं. देन कम टू द पोस्टपार्टम. ये पोस्टपार्टम क्या है? पार्चुरेशन यानी बर्थ यानी काविंग के बाद
क्या हम केयर करते हैं वो जो पीरियड होता है जिसमें कि यूट्रस अपने नॉर्मल कंडीशन में आता है, उसको पोस्टपार्टम करते कहते हैं। और सबकी साइकिल और सबके टाइम हम बताएंगे आपको। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड shows what are the factors why we are not getting good productivity in the animal, why our animals are not getting inseminated properly, why they are not getting pregnant in time, and why we are getting losses from this. So what happened, the first factor is did not have heat calendar. पूरे देश में कहीं भी ये पाया नहीं जाता है। बड़े बड़े फार्म्स के बाद भी पास भी हीट कैलेंडर नहीं होते हैं। हीट कैलेंडर रखने का मतलब है जब हमें पता है कि 111 नंबर की गाय हर 21 तारीख को, मतलब 21 तारीख को इस बार हीट में आई है, तो उसके 21वें दिन हम जोड़ सकते हैं कि किस दिन ये हीट में आएगी। तो इस तरह ये हीट का जो डेट होता है वो हर एक एनिमल का अलग होता है। हमें क्या सोचना है, चूंकि उनका टाइम फिक्स्ड है कि 21वें दिन हीट में आएगी, तो व्हाट वी हैव टू डू, एक कंप्यूटर पे ये डिजाइन कर लेना है या डायरी में डिजाइन कर लेना है। इफ यू हैव गॉट 100 एनिमल्स, so design that and put the dates after every 21 days, and you go on following the animal every 21 day on that particular animal on that particular date, and you will find that you are not able to miss the heat. You are getting the heat, and that heat you are going to utilize it for the production of the calf. Could not detect the heat, होता क्या है कि बहुत सारे एनिमल जो हैं वो साइलेंट हीटर होते हैं, क्योंकि उनकी फीडिंग इतनी अच्छी नहीं की गई, क्योंकि उनका जेनिटेलिया इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ, तो वो उतने बढ़िया से हीट को, शाइन को शो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस में रहते हैं। तो स्ट्रेस में रहने वाला एनिमल हीट साइन को शो नहीं करेगा। हीट साइन उनके लिए एक एंजॉयमेंट का साइन है। वो तभी होता है जब एनिमल काफी कूल हो, उसको कोई पोल्यूशन नहीं हो, वहां पे कोई साउंड पोल्यूशन नहीं हो, एयर पोल्यूशन नहीं हो, वाटर पोल्यूशन नहीं हो। इन चीजों के बाद जब होता है तो एनिमल गुड साइन शो करता है। वो साइन कभी भी आप मिस नहीं कर सकते। कुड नॉट गेट गुड सीमेन इन द टाइम, क्या होता है कि एनिमल जो है उसको हीट में तो आ गया, आपने पकड़ भी लिया, आपने समझ भी लिया, नाउ यू आर सर्चिंग फॉर द सीमेन. Now you start searching. By the time heat has got a particular period, we will discuss everything in detail. So you are not getting good semen during that period. Could not get inseminator in time. You have got the semen. Everything is there, but the inseminator who is putting the semen inside the genitalia, inside the uterus of the cow, that is not available. That person is not available. So the time goes off. If got inseminator, you have got the inseminator, but he did not have used the semen in a good way. Like thawing temperature he could not maintain, and the semen, the sperms died in the process of doing the AI. It is possible, it is happening. If good semen was used, suppose good semen was used, suppose it did not, what that person has done, he has not reached to the uterus to drop the semen. Unless the semen is dropped inside the uterus, you are not going to get the pregnancy. So this is a sure shot that this animal, if you are not putting the right place the semen, this animal is not going to get pregnant, and you are going to get the repeat heat. Now it was a heifer, and its genitalia, this is the first time it's going to receive the semen, and its genitalia is quite soft, and now it's quite soft, very small. So now you are doing very harshly treating the genitalia of this heifer, and the heifer is not able to bear the pain, and that is why it is not able to in a good condition to receive the semen. So though you have done everything good, but the genitalia was not handled softly, this animal is also not going to be into the pregnancy state. If everything is good, animal is good, its inseminator is good, everything is there, but the animal post AI care was not done. After AI, animal is being under stress, lot of heat, lot of sound, lot of running, lot of here and there, lot of
chaotic condition around the animal. So the animal is not going to be pregnant. So these are the things. What are the main factors? It's a genetic factor. Animal has to come in heat if the genitalia is proper, if the genetic character is okay. So you will get the animal into the heat. That also factors. Good feeding. We know good feeding develops good genitalia. We know the feeding what we are doing in our country. We know majority of animals are reared by the person. They do not have the resources to feed the animals, and whatever is the leftover in the house, they are feeding the animal. So animal are always under the negative feeding, negative energy feeding. So genitalia development takes time. Animal body weight growth takes time. So handling of genitalia is very important. Most of the experienced inseminator, they handle the genitalia properly. The new inseminator, he doesn't know that which which animal genitalia is softer, which is harder, which one I can handle little rough, which one I can handle with very soft. So he is treating all the animal in one go, and that is how the result comes in front. So care of the animal post AI is very important. After AI, you leave the animal. You have done the job. You feel that, wow, I have done the job. हमने अपना काम कर दिया. Now अब एनिमल का काम करना है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि एनिमल को हमारे यहाँ स्ट्रेस में रखा जाता है. जो नेचुरल स्ट्रेस है वो तो है ही है. जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास शेड नहीं है, वो स्ट्रेस तो है ही है. उसके बाद भी एक नया स्ट्रेस डेवलप करते हैं हम लोग. उसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे. तो अब 51% ब्रीडेबिलिटी के लिए यही चीजें जरूरी है. These are the factors that we are not able to improve our breedability. We are not able to improve our per animal production. Let's see what is the new thing. What is coming here? Missed heat. What is missed heat? What are the factors which is allowing us to miss the heat? Negligence. Mostly about 75% is only negligence. Nobody bothers when the animal is going to come in the heat, and they miss the heat. No heat calendar, obviously. In country, it is not seen anywhere, the heat calendar. The estrus due to metritis, already animal genitalia is infected. The last time when it was parturited, the placenta has not been cleared. The animal uterus has not been clear. Still the animal uterus is regressing, still coming to the normal, not yet come to the normal, and you are trying to inseminate. Silent heat animals. There are many animals which are silent heaters, like buffaloes. They are silent heaters. We have to observe very keenly to find out the heat symptoms. Now heifer shows non-periodic cycle. Always be careful. हम बछिया को जब पहली बार सीमेन देने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसका साइकिल प्रॉपर आया है कि नहीं आया है, तभी आप दीजिए. और ये तब आता है जब सेम डेट पर साइकिल रिपीट होती है. अगर 21वें दिन रिपीट हो रहा है तो साइकिल नॉर्मल आ गया है, अदरवाइज साइकिल नॉर्मल नहीं है. और उसके जेनिटेलिया को एआई करते समय कृपया बहुत ही सॉफ्टली हैंडल करिए, अदरवाइज आपका रिजल्ट निगेटिव आने वाला है. नो प्रॉपर फीडिंग टू हीफर्स. आप देखेंगे प्रॉपर फीडिंग टू हीफर्स नहीं किया जाता इस देश में. इस देश में हीफर्स को बेकार माना जाता है. वो समझते हैं जब तक दूध नहीं देती है तब तक ये हमारे लिए बेकार है, और वही कारण है कि उसका जेनिटेलिया ही डेवलप नहीं होता है. यही कारण है कि जिसको 22-24 महीने में प्यूबर्टी पे, अपनी मेच्योरिटी पे आ जाना चाहिए, वो 36-36 महीने तक मेजोरिटी पे नहीं आते हैं. और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है. और मैं आपको बताऊं कि स्टेज वाइज फीडिंग हम कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं. जैसे आज एनिमल ने बच्चा दिया है तो उसका भाई फीड कुछ और होगा. आज एनिमल ने 2 महीना हो गया बच्चा दिए हुए, ज्यादा दूध दे रहा है, उसका फीड कुछ और होगा. अगर वो उसके बाद प्रेग्नेंट हो गया है और दूध दे रहा है तो डबल स्ट्रेस में है, दूध भी दे रहा है, प्रेग्नेंट भी है, तो उसका फीड कुछ और होगा. उसके बाद अगर वो ड्राई हो गया है, दूध तो खत्म हो गया है, लेकिन एडवांस प्रेगनेंसी में चल रहा है, बच्चा देने वाला है, अब
उस समय उसका फीड कुछ और होगा, बच्चा होने के बाद काफ का फीड कुछ और होगा। ये सारे वेरिएशन हम लोग कभी नहीं देखते हैं। बहुत रेयरली किसी किसी फार्म में ये मिलेगा आपको कि हम उसको अलग अलग तरीके से देखते हैं और ग्रुप फीडिंग करते हैं। और यही कारण है कि जनरली जेनिटेलिया अच्छा डेवलप नहीं पाया जाता है एनिमल्स में, और जो पाया जाता है वो जैसा डेवलप हुआ रहता है उसी तरह से बिहेव करता है। निगेटिव एनर्जी फीडिंग की बात हम लोग कर चुके हैं। लेट अस टॉक ऑफ द एनिमल केप्ट अंडर स्ट्रेस, इसकी बात हम लोग फर्दर करेंगे। और मिनरल मिक्सचर डेफिशिएंसी तो एक बहुत ही कॉमन केस है भारतवर्ष में। और जो मिनरल मिक्सचर जो अवेलेबल भी हैं हमारे मार्केट में, उनकी भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए कोशिश किया जाता है कि कैटल फीड और मिनरल मिक्सचर दोनों चीजें भले ही एक कमजोर या एक कम इंग्रेडिएंट डाल करके हम कोई कैटल फीड बनाएं या मिनरल मिक्सचर बनाएं, पर फार्म पे बनाएं और वो अगर जानवर को खिलाते हैं, वो बाजार से खरीदे हुए से it will be much better quality than what is available in the market, the cattle feed and mineral mixture. Let's see why the PD comes negative. क्यों एनिमल खाली निकल जाता है? जब हमने एआई कराया और उसको हमने 2 महीना वेट किया, और उसके बाद जब हमने पीडी कराया, पीडी मतलब प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, जब हम हाथ डाल करके उसको देखते हैं कि जानवर प्रेग्नेंट है कि नहीं। पहले तो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करने वाले बहुत कम हैं, लेकिन इंसेमिनेटर्स की इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर जो अच्छे इंसेमिनेटर हैं वो पकड़ लेते हैं, 45 दिन पर भी पकड़ लेते हैं कि एनिमल पॉजिटिव हो गया है, मतलब प्रेग्नेंट हो गया है। और कुछ होते हैं वो 3 महीने तक नहीं पकड़ पाते हैं। तो हमें देखना होगा हम किसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारा हाउ इज माई इंसेमिनेटर बिहेविंग। तो उसके हिसाब से आप इंसेमिनेटर को चुन सकते हैं, भले थोड़ा पैसा देना पड़े। अच्छे इंसेमिनेटर से अपने एनिमल को पीडी कराइए या एआई कराइए, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। सो व्हाट इज दिस, लुक एट दैट व्हाई पीडी कम्स नेगेटिव। एनिमल खाली क्यों निकलता है? बैड क्वालिटी सीमेन, LN2 में रखा जाता है सीमेन, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर सीमेन को स्टोर किया जाता है, और वो लिक्विड नाइट्रोजन के भीतर रखा जाता है। ये लिक्विड नाइट्रोजन इवेपोरेट होता रहता है। अब एक इंसेमिनेटर को सोचिए, उसको 5 गांव में जाना है, अब पांचों जगह एआई करना है, वो कैसे लेके जाएगा इसको? तो छोटे छोटे थर्मस होते हैं जिसमें वो लेके जाता है। एक जगह खोलता है, 2 जगह खोलता है, 3 जगह खोलता है। बाद में आप देखेंगे कि उसमें LN2 है ही नहीं, सीमेन खाली रखा हुआ है। उसको तो पैसे से मतलब है, वो आपसे पैसा ले लिया, और सीमेन जो LN2 तो कब का उड़ चुका है, उसी सीमेन डोज को वो जाकर के आपको इंसेमिनेट कर देता है फार्म एनिमल्स में। तो रिजल्ट तो वैसा ही आएगा। सीमेन अच्छा नहीं है तो रिजल्ट तो वैसा ही आएगा, एक कंसेप्शन तो होगा नहीं, पीडी निगेटिव आएगा। 2 महीने का अंतर आएगा, 2 महीने जानवर खाएगा, बाद में पता चलेगा कि पीडी निगेटिव है। यही हाल है ट्रांसपोर्ट के लेकर के। जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं सीमेन को एक जगह से दूसरी जगह, तो LN2 का ध्यान कई कई बार नहीं रख पाते हैं, कई बार LN2 नहीं मिल पाता है रास्ते में, और LN2 ड्राई हो जाता है। और जितना लिक्विड नाइट्रोजन डोज, जितना सीमेंट डोज हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे जो है ड्राई हो जाते हैं। और ड्राई को, एक बार हुए ड्राई को दोबारा आप वेट नहीं कर सकते। उस सीमेंट डोज को दोबारा यूज करने से कुछ नहीं होने वाला है आपको। थाइंग के केस में क्या होता है कि जब एनिमल का सीमेन -196 डिग्री टेम्परेचर पे रखा हुआ है, और आप चाहते हैं कि वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे आए, तो एक गुनगुने पानी में उसको हम लोग डाल करके थाइंग करते हैं। और थाइंग कंडीशन में क्या होता है, अगर पानी बहुत गर्म है तो थाइंग में सीमेन का स्पर्म मर जाता है, और उसके बाद व्हेन यू आर डूइंग द इंसेमिनेशन, इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव। सिमिलरली, the badly handled genitalia, already we have discussed in the heifers. It is being done in our country at a large scale. Inseminated at wrong time. पता ही नहीं है कब हमको सीमेंट डालना है, कब हीट में आया का पता नहीं है, कब सीमेंट डालना का पता नहीं। अगर पता भी है तो इंसेमिनेटर नहीं मिल रहा है, इंसेमिनेटर मिल रहा है तो सीमेन नहीं है, और सीमेन है तो HF का सीमेन है, हमने जर्सी में डाल दिया। तो कुछ भी कर रहे हैं हम लोग। ब्रीडिंग की जो जो हालत है पूरी कंट्री में, वो बहुत ही दयनीय है। सो दैट वी हैव टू स्टॉप, वी हैव टू थिंक ऑन दैट,
Animal is also a living body. Please don't torture the animal. Please love the animals. Animal is going to give you wealth. Please love the animal. Come on, the next point. Uterus is infected. You have not bothered what the discharge is coming from the uterus. You have not bothered that why this uterus, the animal is not receiving, because the the uterus is not developed properly. The genitalia is not developed properly because the feeding was not done when it was a heifer. When the genitalia was developing, feeding was not done properly. Animal feed more. And generally, this is a general case in our country. More concentrate plus dry fodder is being fed to the animal. There is no green, there is no silage support, and that is how the animal runs into ketone body and acidosis or ketosis, and those diseases do not allow the animal to come into the heat, and they stop the heat or they delay the heat. Even if you are doing the insemination, the animal may not accept the semen. Now look at the semen drop at the wrong place. We have already discussed it has to be dropped inside the uterus, and if it is not done, animal is not going to be pregnant. Mineral mixture we have already discussed. Clean drinking and clean water availability 24/7 is required, which is in most of the farm you will not find it. Either it is very dirty water, it is not drinkable water, or never replace the tank. All those things you will find in the farm, and it is also a reason for animal not getting pregnancy. Now look at the other thing. So negative pregnancy we have discussed. Let's go to the next point. Next point is very important. What we are talking is here is reproductive tract. How does the reproductive tract of a cow look like? We are not talking about the front part of the animal. We are talking of the back part of the animal. See, look at that. This is the one number is vulva. Second number is vagina. Third number is the cervix. This part is very important. Third number. And fourth number is the body of the uterus. From here the uterus starts. If you look at that, the from four the uterus start like this, and it goes and make the two horns. Like it goes from here, one horn is here, one horn is here, and in between there is a ovary. So ovary gives the ova, and we are putting the sperm from here. So this is called the artificial insemination. Okay, so this is a kind of picture I just wanted to show that when we are putting the semen to the animal, we are putting our hand in the anus and then putting the, trying to hold the cervix. Once you hold the cervix, and then you put the AI gun into the vulva and vagina and cross the cervix to reach up to the uterus body, so that when you drop the semen is dropped at the uterus body and not the wrong place, right? We will not go into the much detail because it is for the farmer's help. Farmer may not understand very deep the technology. We will be discussing just the superficial part of this. But this is the technology which is being used. Look at the puberty. India puberty is 20-22 months, means maturity. When the heifer is going to receive the semen. In USA it is 15 to 16 months. In UK it is 11 to 12 months. See how we are behind in maturing the animal because we don't feed heifers properly. Look at the conception. The conceive one when we are conceiving in UK it is 15-16 months heifer is conceived. It is already pregnant. And in USA it is 19 to 20 months. In India it is 23 to 25 months. It's more than that. It is getting first insemination, and pregnancy is diagnosed after 2 months, it is pregnant. So this is conceived. And look at the other part, deliver, when it is going to deliver. In India it is 32 to 33 months it takes to deliver a calf. In UK 24 to 25 months it take to
takes to deliver a calf. In US, it is 28 to 29 months. So this is an average. It may vary from places to places. And here is the estrus cycle, which gives you certain time when you can do the insemination. We will discuss this part, stages of female reproduction, in different slides, next slide. But here let's see how does this puberty changes in different countries. These are the conditions. The genetics of the animal behaves differently. The feeding of the animal is done differently in different country. India versus UK and versus US, I have tried to compare. And the climate, the climate and the other stress. Climate gives lot of stress to the animal everywhere in all countries. Whether it is a cold climate, whether it is a hot climate, but the animal need 37-degree temperature, 37 degrees centigrade, the body temperature. And look at the stress, the last part, stress. What stress we are getting over here is, in India, there is another stress, additional stress. We beat the animal. We run the animal from here to there. We chase the animal. Animal thinks where I am with a human person or I am with the animal. So this is how we are dealing our dairy animals. Our dairy animals are loving animals. They are pet animal. They should be treated very nicely and very lovingly. Let us see the estrus. Suppose the estrus in this, suppose this is the onset. It was a 0-hour onset. Okay. So after till 4 hours, it is the not standing heat. Means the animal is not ready to accept the semen. Thereafter, the standing heat starts. And what is suggested is, you inseminate the animal only from 12 to 18 hours of onset of the estrus. The heat has come in the morning at 6 o'clock. 6 o'clock. After 12 hours, it will be evening 6 o'clock. And then you can do the insemination. Or early in the morning, wait for another 8 hours, and you can inseminate early in the morning at 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock. So generally from 12 to 18 is the best time to inseminate the animal. Now look at that. Here is a red line we have given. Yes, if you have missed this good period, then you can go up to 24 hour of the time of the onset. Suppose the onset was a 0 hour, and now you are coming for the 20-hour insemination, 22 hours insemination, 24-hour insemination. It is also possible, but chances of getting pregnancy reduces after 18-20 hours of the onset of the estrus in the cow. So this is how we will be requesting all the farmer to please be watchful about the onset of unless you know the onset, you cannot calculate the hours for ovulation. आप ओवुलेशन आप जो है इंसेमिनेशन की बात सोच ही नहीं सकते हैं जब तक आपको पता ही नहीं है कि कब ये हीट में आई है. तो अब आप आइए देखते हैं क्या कि स्पर्म जो है वो 24 से 34 घंटे तक जिंदा रहता है. अगर एक काऊ में डाला गया है तो इतने घंटे तक वो इंतजार कर सकता है या फर्टिलाइज कर सकता है ओवम को. ओवरी से जो ओवा निकलता है, वो ओवा निकलता है आपको ओवरी से, वो 28 घंटे के आसपास, 28 से 32 घंटे के आसपास निकलता है. इस पीरियड में अगर हमने यहाँ पे एआई कर दिया है तो वो सीमेन उसके लिए जरूरी है और वो उपलब्ध है और वो फर्टिलाइजेशन कर देगा और यहाँ प्रेगनेंसी हो जाएगी. तो हमें क्या देखना है कि ईस्टर साइकिल 21 दिन का होता है. ईस्ट्रस पीरियड जो होता है वो 24 से 36 घंटे का होता है. इट्स ओनली घंटा, आवर्स. हमने यहाँ आवर्स में शो किया हुआ है. और स्टैंडिंग हीट केवल 4 से 18 घंटे तक की होती है. इससे ज्यादा स्टैंडिंग हीट आपको नहीं मिलेगी. स्टैंडिंग हीट जबकि एनिमल चाहता है कि उसको इंसेमिनेट किया जाए, एनिमल रेडी है सीमेन लेने के लिए या बुल को एक्सेप्ट करने के लिए. बेस्ट टाइम ऑफ द एआई क्या है? 12 से 18 घंटे के भीतर, जो हम लोगों ने चर्चा किया. एंड ड्रॉपिंग ऑफ द सीमेन इन द बॉडी ऑफ द यूट्रस, ये सब चीजें हमने दिया है, आप पढ़ सकते हैं. पढ़ने के बाद स्पर्म वायबिलिटी भी बता दिया हमने कि कैसे हमको इसको
इतने दिन का ध्यान रखना है। और ये हमारा यूट्यूब हैंडल है, कृपया इसको सब्सक्राइब करिए। अच्छे अच्छे आपको आपके सब्जेक्ट के वीडियो आपके सामने आएंगे और वो आपकी भाषा में और आपके लेवल के अंडरस्टैंडिंग में आपके सामने आएंगे, जो आपको आपके एनिमल को रख रखाव में उनसे ज्यादा पैदावार करने में आपको लाभ देंगे। चलिए हम देखते हैं अगले स्लाइड में हमने क्या दिखाया है। अब यहाँ पे क्या इंटरकाविंग पीरियड की बड़ी चर्चा होती है। इंटरकाविंग पीरियड क्या है? इंटरकाविंग पीरियड ये है कि अगर मान लीजिए ये 0 महीना है, ये पहला महीना है और इस तरह से हमने 13 महीने यहाँ पे बार में दिखाया हुआ है और यहाँ नीचे दिन भी दिखाए हुए हैं कितने दिन। तो आप समझिए कि अगर एनिमल हीट में आया है, पहली बार आया है, तो हम उसको पहली हीट को छोड़ देते हैं। पहली हीट को छोड़ देते हैं तो कब करेंगे हम? उसके बाद हम एआई करते हैं। दूसरे हीट में हम एआई करते हैं। ये है जो हम एआई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये 60 से 65 दिन में आता है। अगर एनिमल पहली बार हीट में आया था तो उसके बाद ये नेक्स्ट हीट आएगा 21 दिन के बाद, उसको ध्यान रखना है और हमको सेकेंड हीट में ही करना है। तो अगर 0 डे से काउंट करेंगे तो आपको प्यूबर्टी के 0 डे से काउंट करेंगे तो 60 से 65 दिन में ये आता है। वहां पे हमें ध्यान रखना है कि कब उसका हीट आया, वहीं इंसेमिनेट करना है। और उसकी पीडी हम ऑलरेडी 2 महीने बाद करेंगे। जब हम उसका पीडी करते हैं, जैसे हमने सेकेंड मंथ में इंसेमिनेट किया हुआ है, तो चौथे मंथ में पीडी करेंगे और पीडी पॉजिटिव आ जाता है तो वो 9वें महीने में काफ एक पैदा कर देता है। तो हम जिसको हम इंटर काविंग पीरियड कहते हैं, वो पहला काफ यहाँ पर हुआ था 0 में, यहाँ पे काविंग हुई थी और उसको 40 से 60 दिन लगे थे यूट्रस को नॉर्मल करने में और दोबारा सीमेन एक्सेप्ट करने में। तो वो अब दूसरा काफ जो है वो 243 या 252 दिन के बाद पैदा कर रहा है। इसके पहले एक चीज बहुत जरूरी है यहाँ पे जानना कि हम कैसे कैसे इसको ड्राई कर रहे हैं और एडवांस प्रेगनेंसी उसकी कहां से दिख रही है। 8 महीने से लेकर के 8वां महीना जो है, आपने एआई किया दूसरे महीने, तो 8वें महीने में 6 महीने का बच्चा पेट में है और ये 6 महीने से लेकर के 9 महीने तक का जो पीरियड है वो एडवांस प्रेगनेंसी का फीड उसमें देना पड़ता है। अलग से एनिमल को उसको एनर्जी की जरूरत होती है, अलग तरीके के फीड की जरूरत होती है। एक पोस्ट काविंग फीड होता है, जब जानवर बच्चा दे दिया उसके बाद किस तरह का फीड देना है वो इस पीरियड में देना है। और एक ड्राई पीरियड में, जबकि एनिमल दूध तो नहीं दे रहा है लेकिन उसके पेट में बच्चा है और उसको दोनों को मिला करके हमको फीड देना है, वो भी फीड अलग होता है। इसको हम इंटरकाविंग पीरियड कहते हैं और तरह तरह की फीड इस पीरियड में जानवर को दिया जाता है। इस देश में बहुत कम जगह देखने को मिलेगा कि लोग उसके स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी के हिसाब से पीपल आर फीडिंग टू द एनिमल। They don't have resources in most of the cases. Those who are having resources, they do not know how to do, and they don't know the knowledge, they don't have the knowledge, and that's why they generally miss these things. अब हमें बिफोर काविंग क्या करना है? वॉच द हीट, बहुत जरूरी है जानना कि हीट कब हुआ। यहां पर हम देखेंगे वॉच द हीट कब हो रहा है। बच्चा एनिमल गाभिन होने के, बच्चा देने के बाद फिर से कब हीट में आ रहा है, ये हमें देखना है। उसके बाद इंसेमिनेट 60-90 डेज में हमको इंसेमिनेट कर देना है। 60 से 85 डेज एडवांस काविंग का जो पीरियड होता है उसमें अलग से 60 से 85 डेज का एडवांस काविंग का फीड देना है हमें। पोस्ट काविंग का फीड जो हम दे रहे हैं, पोस्ट काविंग का फीड जब बच्चा दे देता है उसके बाद क्या देना है उसकी जानकारी हमें प्राप्त करनी पड़ेगी। आपको नहीं मालूम है, आप डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए, आपके बगल में डॉक्टर साहब रहते हैं, वो बताएंगे कि इस जानवर को क्या खिलाना है, जिसकी वजह से आपको ये तो पता रहे कि आप एनिमल के साथ वो फीड कर रहे हैं, उसको वो चीजें खाने को दे रहे हैं जिसकी उसको जरूरत है। इसी तरह से ड्राई पीरियड, प्रेगनेंसी पीरियड का, ये ड्राई प्रेगनेंसी पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम समझते हैं जानवर ने दूध देना बंद कर दिया, उसको खिलाना हम बंद कर देते हैं। एक्चुअली उसको पेट में बच्चा एडवांस प्रेगनेंसी में है और उसकी जिम्मेदारी अभी भी है, उतना उसको फीड चाहिए। वो मांग तो सकता नहीं, आपसे छीन सकता नहीं है,
लेकिन आप नहीं खिलाते हैं। और उसका नतीजा होता है कि बच्चे का जो वेट होता है, जो काफ का जो वेट होता है प्रेग्नेंट डिलीवरी में, वो उतना अच्छा नहीं आता। वहीं से उसके क्रिपल होने की कहानी शुरू हो जाती है। अच्छा वेट नहीं आता। अगर ये बछिया है तो डेवलप होने में काफी समय लगेगा, क्योंकि बछिया को भी नहीं खिलाते हम लोग। तो डेफिनेटली जितने दिन में बछिया जवान होनी चाहिए, जितने दिन में बच्चियां गाभिन होने के लायक हो जानी चाहिए, उतने दिन में नहीं हो पाती और ज्यादा समय लगता है। अब इसके लिए कारण क्या है? काविंग के बाद क्या ध्यान देना है? प्लेसेंटा गिरा कि नहीं, झेर गिराया कि नहीं जानवर ने, उसके बाद कोलेस्ट्रम हमने बच्चे को पिलाया कि नहीं पिलाया, बहुत जरूरी है। या फीड जो है, डैम का जो फीड है, हार्ड सेमी लिक्विड फीड, हम लोग बच्चा जब एनिमल जब बच्चा देता है उसको एक सेमी सॉलिड लिक्विड कंसंट्रेट फीड मिला करके, उसको उबाल करके, थोड़ा हाफ कुक करके या फुल कुक करके उसको देते हैं। इससे क्या होता है कि जो उसका प्लेसेंटा है, जिस जो बच्चे को पकड़ने वाला जाली है जो यूट्रस में रहता है, वो अपने आप गिर जाता है बाहर, और यूट्रस जो है नॉर्मल होने में और कोई इन्फेक्शन यूट्रस में नहीं होता है। अब स्ट्रेस नहीं देना है, ये तो हमारे यहाँ संभव नहीं है भारत में। ठीक है, हीट स्ट्रेस तो है, एयर पोल्यूशन तो है, कम से कम उसको एक शुद्ध पानी तो दे सकते हैं। उसको अच्छा रेन में तो खड़ा नहीं रहने देंगे, उसको ले जाएंगे शेड में डालेंगे, है ना। ये सब चीजें तो कर सकते हैं, कम से कम उसको मारें तो नहीं। सो दीज आर द थिंग्स। एनिमल को दौड़ाएं तो नहीं। अब आपने उसको अभी काविंग किया है, आप उसको दौड़ा रहे हैं, यूट्रस तो उसका निकलेगा नहीं, मतलब जल्दी से रिग्रेस होगा नहीं, फिर वो जल्दी से हीट में आएगी नहीं। तो गलती हम करते हैं, दोष जानवर को देते हैं। ये हमारे डेयरी फ्रेटर्निटी में एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इसको हमें रोकना होगा। हमें समझना होगा कि एनिमल भी लिविंग है, उसको प्यार की जरूरत है, मार की नहीं। अब आप आइए हम अगले में चलते हैं कि जब हम हीट मिस करते हैं तो लॉस कैसे होता है। हम कहेंगे कि क्यों लॉस हो रहा है जी, कोई लॉस नहीं हो रहा है, हमें काय का लॉस हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है जी। हाँ जी, बिल्कुल लॉस हो रहा है। आप कैसे लॉस हो रहा है? अब पहला बच्चा यहां हुआ था, दूसरा बच्चा यहां हुआ था, ये इंटरकाविंग पीरियड हमारा आप देखेंगे तो, अगर आप गौर से देखेंगे तो, ये 12 महीने का इंटरकाविंग पीरियड, जिसको हम कहते हैं हर साल जानवर को एक काफ देना चाहिए, ठीक है ना, ये नॉर्मल है। अब उसको तो फिर से 40 दिन हमने, 60 दिन हमने दिया कि वो एआई हो जाना चाहिए। वो एआई आया था, हीट में आया था जानवर, हम मिस कर गए, हम मिस कर गए। अब मिस कर गए, उसके बाद क्या हुआ, हमने 1 महीने बाद उसको, 2 महीने बाद एआई किया। जब आपने एआई किया उसके बाद 2 महीने बाद पीडी करेंगे। when you are doing the PD, then you are finding it is positive. Very good. If it is positive, then the third calf will come on 22nd month. बिल्कुल ठीक है ना। आप 9 महीना जोड़ लीजिए एआई के बाद से। सो इट इज पॉसिबल। अब क्या हुआ कि जब आपने यहाँ पे पीडी करवाया, सो देर इज अनदर पॉसिबिलिटी द पीडी इज निगेटिव। एआई ठीक से नहीं हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड, दैट इट इज नॉट अलाउइंग द पीडी टू बिकम पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कारण थे। सीमेन ठीक से नहीं पड़ा, सीमेन अच्छा नहीं था, इंसेमिनेटर अच्छा नहीं था, या स्ट्रेस में एनिमल था तो उसने रिसीव नहीं किया, एक करके हमारा पीडी निगेटिव हुआ। तो क्या करेंगे? फिर डॉक्टर साहब बताते हैं कि आप इसके अंदर यूट्रस का क्लीनिंग करा लीजिए। आप, बहुत अच्छा बात है साहब, आप क्लीनिंग करा लिए। क्लीनिंग कराने के बाद वो बोलते हैं अगला हीट छोड़ दीजिए, उसके बाद वाले हीट में आप करिएगा। तो आपका जो सेकेंड एआई यहाँ हो रहा है, इस एनिमल का जिसका एआई यहाँ होना चाहिए था 13वें महीने में, वो अब आ गया 18वें महीने में। अब आप बताएं, ये 6 महीने तो जानवर खा रहा है ना आपके यहाँ, वो खाने का लॉस तो हो रहा है ना। अच्छा, जानवर दूध दे रहा है इसलिए आप खुश हैं कि नहीं दूध तो दे रहा है, चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं। अब आप आगे आइए, यहाँ पर जब आप एआई करते हैं तो फिर से 2 महीने बाद पीडी कराते हैं। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो आपको तीसरा काफ जो है 23 महीने में मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 23 महीने में जब आपको काफ मिल रहा है तो फिर उसके बाद आप, फिर भी ठीक है, 1 महीने का लॉस हुआ है, क्योंकि यहां पर आप नहीं करके आपने यहां पे किया था,
वो यहां पर आना चाहिए था, कोई बात नहीं यहां पर आया, लेकिन जब ये वाला AI2 हुआ 18 महीने में आप कराए हैं, तब तो 27वें महीने में बच्चा आएगा। तो ये जो 5 महीने का गैप आप कर चुके हैं, इस 5 महीने का लॉस तो आपको बियर करना पड़ेगा। You have to bear these losses. Then suppose that there also the PD became negative. Then what you will do? Suppose the PD became negative. Then what you will do? Again you will go for the uterine cleaning. Again there will be medicine put into that, the uterus. And then again repeat breeding AI will be done here. And this repeat breeding AI will give a calf. If it is the PD become positive, it will give a calf in 31st month. And what is the reason? We missed the heat. That was the main reason. Dropping of placenta was not there, and that is why there was the uterine cleaning was being done. And the hot semi-solid liquid we could not provide to the animal, the hot beverages, hot food, so that the animal can, remove the, cooked food. Cooked food. There is a proper food for that, removing the placenta just after the birth. For 2 days or 3 days, we feed to the animal. Those who are keeping the animal, they know that, they do that, but not regularly. And not everyone does like that. So no stress. All these things we have discussed. Let's go to the next slide. What happens? Here we are going to discuss that what are your losses? How much you are going to lose if you miss the heat. Same picture is there. You have missed the heat here. And now you are coming to do the AI here. Right? PD is coming negative. Then again you do the AI. The PD is coming negative. And then finally these are the losses. If you have lost for 30 days, your losses come to 24,000 rupees. If you just missed here and just inseminated here, the calf came out 22nd month, you have lost 24,000. How the calculations have been given over here. Now look at the second part. If the miss was for 5 months, you are missing for 5 months, your losses are 1,21,600 rupees. If you are missing the losses for, if you are calculating the losses for 9 months, when the calf comes at 31 month, it should have come on 22nd, but now it is coming on 31 months. So 9 months losses are coming 1,71,200 rupees. And mind it, we have only calculated only two losses. One loss is a feeding loss, whatever the animal you are feeding. And the second loss is the loss of the milk. We have considered that animal was giving 12 liter of milk and we are selling the milk of 50 rupee per liter. So the calculations are given here and you can see how you are going to lose lakhs and lakhs of rupees. Look at the economic benchmark. What is the economic benchmark? So now we have to watch at the age at puberty. When we will do? When we will feed the heifer properly. They will come growth in the proper growth properly. They will be inseminated on 22nd and 24th month, of age of the cow. The heifer should, this is itne month, 23rd month or 22nd month of the age of the cow. They will come, they will become cow, not become cow unless they are giving the birth of a calf. They are not called cow. But anyway, this is the time they should be inseminate. They should be giving birth. Like when they will give. And buffalo cases generally 32 months, 33 months, we have to see the insemination up to the animals, right? We are talking of insemination, not the pregnancy, not the birth. Then the first calf every year, we have seen how the normal condition cow was giving one calf every 12 months. Very simple. In case of buffalo, it has been given 1.5 years because the buffalo has got a different, gestation period. And we are using sex semen, sex sorted semen, so that you get the female calves mostly, right? The animal in heat comes 40-60 days post calving. After the calving,
We have to be very watchful when animal is coming into the heat. And the first heat we have to leave, and second heat we have to inseminate. Inseminate in the next heat, the second heat, and PD after 45, 65 days, 60 days. And then you see the dry period we have to keep essentially 60 to 80 days for the cow and 80 to 90 days for the buffalo. And feed properly during the dry period. And then finally you will get, you will have the heat calendar. You should have a heat calendar for all the animals. If you are having 2 animals, 3 animals, 4 animals, you can do by remembrance. But you have got 100 animals, 200 animals. You cannot do it without the heat calendar. Assign responsibility to a person. He is the person, he is going to check each and every animal on the date when it is going to come in the heat. Note down the time when the animal is coming, has come in the heat. Note down the time when the 12 hour is going to be passed, and between 12 to 18 hour the animal will be inseminated. That has to be done if you want the proper farm to manage. Standing heat, discharge, bellowing, all these things he has to see the person and find out the animal is now ready to receive the semen. And record onset of the heat, most important. And 12, 18 or 20 hour, between 12 to 20 hour you have to inseminate the animal. 12 to 20 hour of the onset of the uterus, when the first sign of heat has come, right? Then code the PD date. Always, every animal will have a different insemination date. They will have different PD date, obviously. And after all, love the animal. Don't beat the animal. Don't treat them badly. Please feed the animal properly. At least give good drinking water to the animals. Love the animal. Be standing near them and do, grasping the animal, putting your hand on the animal. Love the animal. They will return you a lot. Let's go to the next slide. It is here we request our audience to please send their questions, and please, uh, YouTube handle, please you subscribe so that you can watch good videos, time the subject wise videos. And Dairy Consultancy India @gmail.com, you can give your email and we will reply on that. Please don't forget to subscribe our YouTube channel. The details are given here on the bottom of that. And this is what we wanted to communicate. The missed heat is a big loss. Please be careful and manage your farm in economy. Manage your farm in profit and do not make losses. Thank you very much, sir. Thank you very much.